Today, our topic is social institutions, and in this lecture, we will also discuss about the primary social institution, one of the significant social institution, that is family. So, let us first try to understand the meaning of social institution. Social institution is a group of social positions connected by social relations, performing a social role. Simple. Any group of individuals who have specific, we can say, social positions, who have specific social roles to perform, who are connected by social relationships. So we can say, for example, a school. A school is a social institution. It is not the building. Unless the education process is uh, carried out in that structure, it is not that structure, that physical structure, the buildings. It is basically the students, the teachers, the, we can say, the headmaster, who enter into a social relationship. They have specific roles to perform. On the one side there are students, on the other side there are teachers. Teachers have their specific role, students have their specific role. They are organized. There are some special rules and regulations which everybody has to follow. सो सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है समाजी इदारा, माशरती इदारा. तो ऐसा कोई भी इदारा जिसके अंदर जो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों की एक जमात होती है जो ऑर्गेनाइज्ड होती है, मुनज़्ज़म होती है. उनके यहाँ पर कवायदे और ज़वाबित पाए जाते हैं. उस हिसाब से वो अपना अपना जो रोल उनको दिया जाता है वो परफॉर्म करते हैं. जो किरदार उनको दिया जाता है वो उसको अदा करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक स्कूल होता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं, इसी तरह वहाँ पर टीचर्स होते हैं, हेडमास्टर और प्रिंसिपल होता है. तो ये सब मिलकर उस इंस्टीट्यूट को बनाते हैं, क्योंकि इनके दरमियान एक सोशल रिलेशनशिप होती है. ये एक दूसरे से रवाबित रखते हैं. ये एक दूसरे से समाजी जो उनका ताल्लुकात होता है, एक तरफ से वो शागिर्द तालिब इल्म होते हैं, दूसरी तरफ से जो असातिज़ा किराम होते हैं उनका अपना रोल होता है. जो तालिब इल्म होते हैं उनका अपना रोल होता है. जो प्रिंसिपल साहब होते हैं या हेडमास्टर साहब होते हैं उनका अपना जो रोल होता है. और ये रोल वो एक रूल एंड रेगुलेशन के तहत, कवायद और ज़वाबित के तहत अपना अपना जो किरदार, अपना अपना जो रोल है वो अदा करते हैं. It can also be defined in a narrow sense as an institution in a society that works to socialize the groups of people in it. In simple terms, we can say any institution in the society that works to socialize the groups of people in it, because the members of a social institution, they have special or social positions, specific social roles. They interact with each other. They have social relationship with each other. So they try to influence each other. The members try to influence each other through interaction, through relationship. And one of the most significant thing is that this social institution socializes the individuals, the members, which means that it helps the individuals in order to live a smooth social life, because we have different aspects of social life, and it is these social institutions which provide guideline to the individuals how to conduct their behavior, how to live in a society, how to interact with individuals, how to interact with groups. So these all aspects of social life are learned in these social institutions. तो यहाँ पर जो ये इदारे होते हैं, समाजी इदारे या माशरती इदारे, उनका एक ख़ास काम होता है. जो भी इनके साथ वाबस्ता होते हैं, चाहे ये कोई ऑफिस हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई मजहबी इदारा हो, तो इनमें जो अफराद काम करते हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं, और ये उन अफराद को इश्तराकी बनाता है. इश्तराकी का मतलब होता है उनको समाज के अंदर किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी, किस तरह का जो सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं उनके बारे में वो सीखते हैं. कैसे अपने दूसरे साथियों के साथ उठना बैठना, बात करना, उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, तो समाज के अंदर कुल्ली तौर पर अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है. तो ये चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं. तो इन सोशल इंस्टीट्यूशंस में इंसान ये चीज़ें सीख जाता है.
हालांकि उनका एक मखसूस रोल भी होता है, लेकिन साथ साथ ये सोशलाइजेशन भी होती है उन अफराद की, क्योंकि एक ग्रुप के तौर पर वो वहाँ रहते हैं, तो दूसरे जो उसके बाहर जो ग्रुप्स होते हैं, जो लार्जर सोसाइटी होती है, वो अपनी फैमिली में किस तरह अपनी लाइफ गुजारेंगे, अपनी सोसाइटी में दूसरे ग्रुप्स के साथ, दूसरे अफराद के साथ किस तरह वो ज़िंदगी गुजारेंगे, तो ये चीज़ भी वहाँ पर उनको सीखने को मिलती है। Social institutional examples: universities, governments, families, and any people or groups that you have social interactions with. तो ये सब examples of social institutions, because universities, government offices, families, these are all examples of social institutions, because they comprise of individuals, they are a group of people where every member have a specific social role, they enter into social relations, they enter into social interaction. So social interactions take place in these institutions, socialization of individuals take place in these institutions. So these are examples of social institutions. तो ये सब मिसाल हैं, जैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर भी एक रेगुलेशन के तहत उनके पास कवायद ज़वाबित होते हैं, वहाँ पर जो तालिब इल्म होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो सब एक इंटरेक्शन में आते हैं, एक सोशल रिलेशनशिप में होते हैं, और उनका अपना अपना एक रोल किरदार होता है। साथ साथ वहाँ पर वो जो ग्रुप नॉर्म्स होते हैं, जो ग्रुप बिहेवियर होता है, उसको सीखते हैं, ताकि आगे चलकर वो समाज के अंदर कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें, कैसे अपना बिहेवियर कंडक्ट करें। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर सीखने को भी मिलती हैं। तो इन इदारों को हम समाजी इदारे या सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. Why are these institutions established? What is the role of these social institutions? What is the function of these institutions? First is institutions are purposive, because every institution has some purpose. It is not that this institution is purposeless. It has some goal, it has some purpose for which it has been created, it has been established. So हर समाजी इदारा जो होता है उसका कोई पर्पस होता है, कोई मकसद होता है। जैसे स्कूल का अपना मकसद है, इसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनका अपना मकसद होता है, एक मजहबी इदारा होता है उसका अपना मकसद होता है। तो बिना मकसद के ये क्रिएट नहीं किए जाते, इनको बिना मकसद के बनाया नहीं जाता है। दे आर रिलेटिवली परमानेंट इन देयर कंटेंट। अब दूसरी बात कि उनका जो अपना रोल होता है वो एक परमानेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक फैमिली होती है, तो दुनिया के हर समाज के अंदर, चाहे वो कोई भी समाज हो, उसके अंदर ये फैमिली सिस्टम मौजूद है। तो इसका एक अपना रोल है, किस लिए फैमिली वजूद में आई, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो ये परमानेंट होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो स्कूल्स होते हैं, उनका अपना एक रोल होता है, ये हर समाज में उनका रोल यही होगा। इसी तरह रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, ये सब एक तरह के परमानेंट इदारे होते हैं, और इनके रूल के हिसाब से इनका जो किरदार होता है समाज के अंदर, उस हिसाब से ये हम कह सकते हैं परमानेंट होते हैं। Institutions are structured. Now, important point here is that every social institution is structured. It is organized. For example, they have a set of rules, regulations, and as I earlier told that in every social institution there is some specific positions for every member, and they play their role, their specific social role. So these are structured. वो मनज़्ज़म होते हैं. And institutions are unified, because every institution is a group of individuals who come together in order to perform their social roles according to their social positions. So they act as a unit. वो एक जमात की तरह, एक यूनिट की तरह यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि उनके पास एक पर्पस होता है, खास मकसद होता है। जैसे स्कूल का मकसद है कि अपने बच्चों को जो वहाँ पर पढ़ाई करते हैं उनको अच्छी तालीम दे, वो अच्छी तरह कामयाब हों। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए, इस मकसद को अचीव करने के लिए वो सारा जो उनके जो टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होता है, हेडमास्टर होते हैं, बाकी जो भी उसके मेंबर्स होते हैं, वो यकजहती से काम करते हैं उस पर्पस को अचीव करने के लिए। तो ये एक यूनिट होता है। Institutions are necessary value laden. Now, when institutions have a value system,
they or organize it, or they are run on the lines of some we can say set or values, norms, behavior patterns. So in every institution you will find that they have their own value system, because they run through rules and regulations. They have their own behavior patterns. They have their social positions wherein everybody obeys one another. They influence each other, and they have a value based this we can say behavior patterns, norms. तो एक इदारा जो होता है, समाज इदारा, यहाँ पर लोग जो होते हैं, जो काम करते हैं, जो अफराद होते हैं, वो एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम के तहत काम करते हैं. उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, उनका अपना एक तौर तरीका होता है काम करने का, एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे के साथ जो उनका सोशल रिलेशनशिप होता है उसको कंडक्ट करने का. तो ये हर इदारे में पाया जाता है. Next is institutions simplify social behavior for the individual person. The ways of thinking and even acting have become largely regularized and pre-arranged for the individual before he enters in society. Next important characteristic is that every social institution simplifies the behavior for the individual person, because an individual is a member of society. How he has to conduct his life, his social life in the society, how he has to interact with other individuals, how he has to interact with other groups, how his life will be conducted smoothly. So these things are we can say learned in this social institution. They provide a framework to the individual. They provide a ready-made set of social values, norms, behavior patterns, or how to conduct behavior, how to we can say how to create social relation, how to interact with other members, other groups. So these types of different aspects of social life are just provided in a framework to an individual. तो यहाँ पर क्या होता है कि हर इदारा जो होता है, क्योंकि वो जो बंदा होता है उसमें काम करने वाला वो एक फर्द होता है एक समाज का, तो उसके लिए ये इदारा एक रेडीमेड जिसे हम कहते हैं तैयार किया जो एक फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूज के समाज के अंदर ग्रुप एक्टिविटी के अंदर कैसे चलना है, टीम वर्क के अंदर कैसे चलना है, कैसे अपने बिहेवियर को कंडक्ट करना है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना बात करना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारना है. तो इन इंस्टीट्यूशंस में ये सब भी इंसान सीखता है रेडीमेड तौर पर, क्योंकि एक इंसान चूँकि क्या कहा जाता है कि जो इंसान पैदा होता है उसको मरने तक सीखना पड़ता है. तो हर कोई बंदा, क्योंकि अगर एक बंदे को आप अकेले तन्हा किसी जगह जंगल में रखेंगे तो आप देखोगे उसको फिर 10 साल के बाद वापस लाओगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि उसको कुछ पता भी नहीं होगा कि इंसान समाज के अंदर कैसे रहना, फैमिली के अंदर कैसे रहना, कैसे लोगों के साथ बात करनी, कैसे उनके साथ बर्ताव करना है. तो ये सब चीज़ें एक सोशल इंस्टीट्यूशन में उस इंसान को दी जाती हैं. Social institutions provide every child with all the needed social and cultural mechanisms through which he can grow socially. So basically, these social institutions provide a mechanism to the individual, how he can grow his life, how he can develop his personality, how the cultural life, how his social life is conducted in the society, how he will interact with other people, other members of the society who have different cultural backgrounds or who have same cultural background, and how he can conduct his life smoothly in the society. So these types of these norms, values, behavior patterns are provided to an individual through the social institution. तो ये सब चीज़ें उनको सोशल इंस्टीट्यूशन में एक इंसान सीख पाता है. जैसे आप स्कूल में हो तो यहाँ पर आप एक ग्रुप क्लास के अंदर भी और वैसे एक स्कूल के अंदर भी तो आप सीखते हो कैसे हमें मेल्स के साथ बात करनी है, उनके साथ बिहेव करना है, कैसे टीचर्स के साथ बिहेव करना है, कैसे अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ बिहेव करना है. तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर सोशल लाइफ के बारे में मतलब सीखते हो, ताकि बाहर जाकर आप समाज के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने नेबर्स के साथ और जो भी समाज के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं उनके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसा बर्ताव करना है, किस तरह से उनके साथ पेश आना है, तो कैसे सोशल लाइफ कंडक्ट करनी है, ये सब चीज़ें आप इसमें सीख जाते हो. Institution therefore provide ready-made forms of social relations and social rules for the individual. The principle
The principal roles are not invented by the individual, they are provided by the institution. So they provide a ready-made set of values, behavior patterns to the individual, how to conduct his social life in that group and outside that group, with other individuals, with other groups in the society. तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि उसको एक रेडीमेड फॉर्मेट जैसा एक रेडीमेड फ्रेमवर्क दिया जाता है, उसको वहाँ पर सीखता है कि लोगों के साथ काम करते करते, अपना रोल अदा करते करते, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते करते उनके साथ जो सोशल रिलेशनशिप उसका बढ़ता है, तो इन चीज़ों को वहाँ पर समाज में फिर अप्लाई करता है। तो इस तरह उसकी ज़िंदगी सोशलाइज होती है, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी जो लाइफ है उस सोशल लाइफ को अच्छी तरह से कंडक्ट करता है। Institutions also act as agencies of coordination and stability for the total culture. The ways of thinking and behaving that are institutionalized make sense to people. और यहाँ पर एक और चीज़ है, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन एक सोसाइटी में मतलब क्रिएट किए जाते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं, तो उस सोसाइटी का जो कल्चर होता है वो भी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। तो एक बंदा जब किसी इदारे में इंटर होता है, किसी सोशल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनता है, तो वहाँ पर वो जो कल्चरल पैटर्न्स होते हैं, उसका सोशल लाइफ होता है, वो सब चीज़ें वहाँ पर मानी रखती हैं, क्योंकि उसने समाज के अंदर क्या सीखा, फिर उस सोशल ग्रुप के अंदर वो सब चीज़ें देखता है, तो इन चीज़ों को वो देखकर अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से स्मूथली कंडक्ट करता है। और वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन एंड स्टेबिलिटी सीखता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक स्ट्रक्चर्ड होते हैं, दे हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो एवरी पर्सन हैज अ सम specific social role, he has to conduct his social role according to the norms, according to values, according to rules. So यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी होता है, एक दूसरे के साथ एज ए यूनिट काम करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन भी सीखता है यहाँ पर, ताकि स्टेबिलिटी आए इस इंस्टीट्यूशन में, सो बाहर जाकर इस समाज के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, क्योंकि समाज उन इंस्टीट्यूशन से बना होता है। तो जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे, स्टेबल होंगे, उसका मतलब ये है कि वो समाज भी, वो सोसाइटी भी स्टेबल और स्ट्रांग, मजबूत होगी और मुस्तहकम होगी। Institutions tend to control behavior. They contain the systematic expectations of the society. Group behavior is often subconsciously fixed through constant repetition. And while there is a need for planning, the group can easily ascertain from its institutions the normal moods, trends, and procedures. So, basically, this is the same thing. The institutions influence the behavior of the individual. He is expected some typical behavior structure or pattern. He has a specific social role to play, and under some certain rules and regulations, norms, he is expected to behave in a particular manner, in a fixed manner. So the social institution influence the conduct of an individual, the behavior of an individual, the way he thinks, the way he conducts his social life. So इसमें ये सब चीज़ें एक इंसान के अंदर असरअंदाज होती हैं कि वो अपनी लाइफ को किस तरह कंडक्ट करता है, उसके अंदर जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो मौजूद है या नहीं है, तो उसमें वो सीखता है दूसरों के साथ कैसे पेश आना है, उनके साथ बिहेव करना है, उनके साथ ज़िंदगी किस तरह जो मतलब गुजारनी है, उनके साथ किस तरह का इंटरेक्शन करना है, तो ये सब चीज़ें उसको समाज में अंदर